नमस्कार जय जगन्नाथ मु आपन को स्वागत करुछि स्टडी एक्यू चैनल रे। आपण माने देखि परुथुबे थंबनेल रु नवेम्बर 2024 रो करंट अफेयर्स डिस्कस हमें करबा। जो माने प्रीलिम्स दउचंदी सेमान को पई मु कहि रखे अगस्त मैक्सिमम जनवरी रु अगस्त पर्यंत करंट अफेयर्स को क्लियरली कवर करिथिबे एवं नवेम्बर एक्चुअली जदि आपण देखिबे जे आपनकर नेक्स्ट ईयर पई जो माने प्रिपेयर होउचंदी नेक्स्ट ईयर जो माने प्रिपेयर होउचंदी प्रीलिम्स 2025 पई सेमान को पई इंपोर्टेंट। ठीक अछि चलंतु स्टार्ट करबा डिस्कशन। आपण माने जानिथिबे हमरो संकल्प फाउंडेशन बैच चली छी। संकल्प फाउंडेशन बैच 11 प्रीलिम्स एंड मेंस रो एटा होची कंबाइंड बैच। 5th डिसेंबर रो हमरो बैच ऑलरेडी स्टार्ट हे छी। लास्ट डेट एडमिशन रो होची 10th ऑफ डिसेंबर। तो जो माने प्लान करूचंदी एग्जाम दवा पई नेक्स्ट ईयर कारण आपण जानिथिबे डिसेंबर मासरे नोटिफिकेशन आसीबो तनु कोड यूज करि परिबे जेएन लाइव टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। ऑलरेडी लोएस्ट साइड रे अछि बट आहुरी मैक्सिमम डिस्काउंट पाइबा पई जेएन लाइव कोड को यूज करिवे। ठीक अछि चलंतु स्टार्ट करबा डिस्कशन। एवं ए वर्ष रो जो माने प्रीलिम्स दउचंदी से माने 6th डिसेंबर 9th डिसेंबर 12th डिसेंबर रे आपण मॉक टेस्ट दे परिबे। फ्री मॉक टेस्ट स्टडी एक्यू रो एप्लीकेशन रे। ओके स्टेट स्पेसिफिक टेस्ट सेगमेंट को जिबे सेठी ओपीईसी पई थिबो सेठी दे परिबे टेस्ट। चलंतु नेक्स्ट प्रथम क्वेश्चन देखिबा। Which of the following statements about the religious significance of temples in Odisha is are correct? Religious significance of temples in Odisha is are correct. First statement को पढ़िबा। The Jagannath temple in Puri is part of the Char Dham pilgrimage sites and symbolizes Odia culture. चार धाम जो आपनकर अछि हिंदू रिलीजियन रे चार धाम पिलग्रिमेज साइट बोली कहि परिबा। चार धाम आपनकर कोठी अछि ईस्टर्न रे अछि पुरी सेमते आपनकर साउथ रे भी गोटे अछि वेस्टर्न रे अछि आपनकर द्वारका एपटे आपनकर अछि बद्रीनाथ नॉर्थ रे। चार धाम पुरी भितरे एटा गोटे धाम मध्यम चार धाम पिलग्रिमेज साइट एंड सिंबलाइजेस ओडिया कल्चर। स्पेसिफिकली जो जगन्नाथ कल्चर अच्छी जगन्नाथ कल्ट अच्छी आपण देखिबे रथ यात्रा प्रमोट्स व्हाट स्पिरिचुअल यूनिटी फैटर्निटी भाईचारा जोटा प्रमोट करे रथ यात्रा। नेक्स्ट द मुक्तेश्वर टेम्पल इज नोन फॉर इट्स एसोसिएशन विथ तांत्रिक वर्शिप एंड फिलोसॉफिकल डिस्कशन। तांत्रिक वर्शिप प्रैक्टिसेस एंड फिलोसॉफिकल डिस्कशन एंड मुक्तेश्वर टेम्पल ये या पाई तो फेमस प्लस आर्किटेक्चरल रिचनेस पाई भी मुक्तेश्वर टेम्पल होची फेमस आर्किटेक्चरल रिचनेस। थर्ड कौन होची सन टेम्पल इज कोणार्क इज प्राइमरली बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज ऑब्वियसली नॉट सन गॉड हिंदू रिलीजियन से हिसाब रे देखिबा को गले थर्ड स्टेटमेंट होची आपनकर इनकरेक्ट अछि। ओके तबे देखिबा आंसर कोटा हबो आंसर होची आपनकर फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट सो ए इज द करेक्ट आंसर ए 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देखिबा 1 करेक्ट अछि द जगन्नाथ टेम्पल इन पुरी इज ए चार धाम पिलग्रिमेज playing a vital role in Odia culture. Its Rath Yatra promotes spiritual unity. Statement 2 भी correct अछि मुक्तेश्वर टेम्पल is renowned for its tantric worship practices and philosophical discussion. Statement 3 who's incorrect. The Sun Temple in Konark is a Hindu temple dedicated to the sun god, not a Buddhist pilgrimage center. Okay, see हिसाब रे देखियो गले both the statement 1 and 2 are correct. Next, who among the following was conferred with the prestigious Sarala Puraskar for the novel Asthira Pada? सरल पुरस्कार कहा को मिलुची फॉर द नॉवेल अस्थिर पद।
ओके काहाक मिली देखिए ऑप्शन रे कौन अच्छे सरोजिनी साहू परमिता महापात्र भगवान जयसिंह एंड बैजयंती मिश्र आंसर कौन हम आंसर हूँ सरोजिनी साहू सरोजिनी साहू जहां को मिली प्रेस्टिजियस सारला पुरस्कार सरोजिनी साहू जहां को मिली प्रेस्टिजियस सारला पुरस्कार कौन पाई नोवेल अस्थिर पद ओके The prestigious Sarala Puraskar was conferred on the feminist writer Sarojini Sahu for her novel Asthira Pada. She was presented a citation and cash reward of 7 lakh as part of the literary award by Indian Metals Public Charitable Trust Impact. Indian Metals Public Charitable Trust Impact. Okay. Next देखिए Consider the following statements regarding the cultural contribution of Odisha's temple. Cultural contribution of Odisha temple. Okay. देखिए cultural contribution कौन first statement कौन कहूची first statement the Sun Temple at Konark influenced Odissi dance through its carving depicting various dance poses. Next, Rajarani Temple's sculptures focus exclusively on the mythological stories without human representation. Brahmeshwara temple carvings celebrate musician, dancers and artistic heritage. ए मध्यरु कोटा करेक्ट आ कोटा इनकरेक्ट ठीक अछि फर्स्ट स्टेटमेंट को देखिबा द सन टेम्पल एट कोणार्क इन्फ्लुएंस्ड ओडिसी डांस थ्रू कार्विंग डिपिक्टिंग वेरियस डांस पोजेस सन टेम्पल रे भी आपण देखिबे डांस पोजेस गुड़िक से कार्विंग है सन टेम्पल रे तेणु से इंस्पायर करुच्ची काहाकू डांस फॉर्म को टेम्पल डांसेस को इंस्पायर करुच्ची ओके सेकंड राजारानी स्कल्पचर्स फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन द माइथोलॉजिकल स्टोरीज विदाउट ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन जदि आपण राजारानी टेम्पल को देखिबे राजारानी टेम्पल को कौन कहा जाए ना खजुराहो टेम्पल मध्य प्रदेश रो जो खजुराहो टेम्पल अछि सेटा ओडिशार राजारानी टेम्पल बोली कहा जाए तेणु जो इरोटिक इमेजेस गुड़िक से आपको देखा मिल ओबियसली ह्यूमन बीइंग कर ही इरोटिक इमेजेस हिसाब रे कार्विंग सेठी करा जायछि से हिसाब रे देखिबा गले स्टेटमेंट होची रॉन्ग ब्रह्मेश्वर टेम्पल कार्विंग सेलिब्रेट म्यूजिशियंस डांसर्स एंड आर्टिस्टिक हेरिटेज दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट वन ओके दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट वन ये स्टेटमेंट भी करेक्ट आंसर होची बी 1 and 3 ओनली आंसर होची बी 1 and 3 ओनली एक्सप्लेनेशन देखिबा The Sun Temple Konark's carvings depicting dancers and musicians significantly influenced the poses in Odissi dance. The Rajarani Temple featured sculptures of both mythological figures and human representation, particularly apsaras and dancers. Okay, mythological figures भी अच्छी, human representation भी सेठी अच्छी. को मने अच्छी dancers and apsaras. Third होची आपनकर correct. Third होची correct. The Brahmeshwara temple showcases carvings of dancers, musicians and other artistic expressions reflecting cultural richness. तो ये भीतर देखिया गले statement 1 अच्छी correct, 2 भी अच्छी sorry 3 अच्छी correct, 2 होची आपनकर incorrect. So answer is B 1 and 3 only. Next, which of the following statements highlight the economic role of temples in Odisha? Which of the following highlights the economic role of temples in Odisha? Economic role. देखिए temples like Jagannath temple owned extensive agricultural lands contributing to local livelihoods. Number 1. Number 2. Pilgrimage centers facilitated the growth of marketplaces and regional trade. Sun Temple at Konark served primarily as the economic hub for maritime trade. तो फर्स्ट तीन को देखिबा फर्स्ट स्टेटमेंट होची जगन्नाथ टेम्पल जो कहूची जगन्नाथ कर निजर ओनरशिप रे ही बहुत गुडे लैंड अच्छी जो गुडी को काहा को दिया जाईची लोकल लाइवलीहुड आपण जदी लिंगराज टेम्पल भी देखिबे सेमती सेठी भी तांकर बहुत गुडे जगह अच्छी जो गुडी को मंदिर रो जगह जोटा को आछे हमें तो सेपरी जगन्नाथंकर जो जगह गुडी को अच्छी लैंड गुडी को अच्छी सेटा को दिया जाईची फॉर द लोकल लाइवलीहुड पाई ओके लोकल लाइवलीहुड
ସେମାନେ ସେଠି ଚାଷବାସ ସେମାନଙ୍କର କରୁଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ମାର୍କେଟ ପ୍ଲେସ୍ ଏବଂ ରିଜନାଲ ଟ୍ରେଡ୍, କାରଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପିଲଗ୍ରିମେଜ ସାଇଟ୍ ହେଲା ମାନେ ସେ ଜାଗାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କମର୍ସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଗ୍ରୋ କରିବ, ରାଇଟ୍। ସେଠି ହୋଟେଲ୍ସ, ମୋଟେଲ୍ସ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟସ୍, ତା ଛଡ଼ା ସପ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆଣ୍ଡ ଦ ସନ୍ ଟେମ୍ପଲ୍ ଆଟ୍ କୋଣାର୍କ ଆର୍ ପ୍ରାଇମାରିଲି ଇକୋନୋମିକ୍ ହବ୍ ଫର୍ ମ୍ୟାରିଟାଇମ୍ ଟ୍ରେଡ୍। ଏଭଳି କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯଦି ସମୁଦ୍ର କୋଣାର୍କଠୁ ବହୁତ ଦୂରରେ, କୋଣାର୍କ ଟେମ୍ପଲଠୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏ यानी कि 1, 2 ଓନ୍ଲି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର। ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନକୁ ଦେଖିବା। Temples like Jagannath temple owned agricultural land and their cultivation supported local communities economically. Statement 2 correct. Pilgrimage centers such as Puri created opportunities for trade and growth of marketplaces. 3 होची आपनकर incorrect. 3 होची आपनकर कोन incorrect. The Sun Temple at Konark was a cultural and religious site not primarily associated with the maritime trade. Okay, moving to the next. Which of the following accurately describe the social impact of Odisha temples? Accurately describes the social impact of Odisha temples. Social impact. Okay. First, Ratha Yatra at the Jagannath temple promoted social unity by bringing people from different backgrounds together. जो जिनसे मैं आपको कहूँ रथ यात्रा को आम कौन कहू पतित पावन, पतित पावन, पतित पतित होचन जोटा दलित, डिप्राइव्ड, पतित पावन यात्रा भी कहा जाए। तेणु जोटा कहा जाए कि प्रथम थर पई माने ओडिशा सॉरी वर्ष को थरे जगन्नाथ मंदिर रु बाहर को आसंती, सो दैट इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, क्रीड जहाँ भी सेमानकर अछि कलर से भक्त भगवान दर्शन दे पारे। एवं से भाईचारा रथ यात्रा, फैटर्निटी, राइट, ताकू भाईचारा बोली प्रमोट करा जाए कहा रथ यात्रा को। तो रथ यात्रा brings social unity by bringing people from different backgrounds together. Temples provided, अपन सिर्फ में भक्त सालवेंग का नाम सुनी थी, दासिया बाउरिंग का स्टोरी सुनी थी। Temples provided free meals like Mahaprasad to the needy, fostering social welfare. Third, religious festivals and temples discouraged gatherings of diverse communities. तो second statement भी correct, Mahaprasad free of cost दिया जाए जो मैंने needy and fostering social welfare. Third is religious festivals and temples discouraged gatherings of diverse communities. Okay, it's not discouraged, rather encouraged. आपण देखिए जो रिलीजियस फेस्टिवल गुड़िक अच्छे, फॉर एग्जांपल जोटा कार्तिक पूर्णिमा जोटा हुए कार्तिक मास कि रथ यात्रा हो, बहुत डाइवर्स बैकग्राउंड लोक मैंने आसी था, भक्त मैंने आसी था। सो थर्ड स्टेटमेंट ऑब्वियसली इनकरेक्ट, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट, सो आंसर इज ए। नेक्स्ट, first is correct. Rath Yatra brought together people from various caste and regions, fostering social cohesion. Okay, caste and region, fostering social cohesion. 2 is correct. Temples provided free meals such as Mahaprasad at the Jagannath temple to help the needy and strengthen social welfare. Third is incorrect. Festivals and temples encourage gatherings and interactions among diverse communities, promoting unity rather than discouraging it. Okay, so this is what the answer is all about. So A is the answer, 1 and 2 only. Next, how did Odisha's temple contribute intellectual and literary development? How did Odisha's temple contribute intellectual and literary development? Temples like Mukteswar became a center for studying tantric practices and philosophy. Just आमे गोटे क्वेश्चन एटा को देखिथिले, तो से हिसाब रे एटा करेक्ट अछि। तांत्रिक प्रैक्टिसेस एंड फिलॉसफी हिसाब रे देखिबे मुक्तेश्वर टेम्पल या मुक्तेश्वर सेंटर होची, मुक्तेश्वर टेम्पल होची फेमस। स्कॉलर्स कंपोज लिटरेरी वर्क्स सच एज ओडिसी रामायण इंस्पायर्ड बाय द टेम्पल रिचुअल्स। ओडिसी रामायण literary works such as the Odissi Ramayana, scholars composed literary works Odissi Ramayana. The Ratnagiri complex was exclusively dedicated to the Buddhist theological studies. Ratnagiri, right? Ratnagiri is dedicated to exclusively to Buddhist theologists, right? Next देखिए,
यार आंसर कौन हम जदि आंसर आप देखिए तीनोटी जगह हूँ करेक्ट स्टेटमेंट डी हूँ आपंकर करेक्ट statement 1 is correct the Mukteswar temple was an intellectual hub where scholars discussed Hindu philosophy and tantric practices Hindu philosophy and tantric practices second scholars inspired by temple rituals composed significant literary works including the Odissi Ramayana okay तो ओडिसी रामायण भी मध्य कंपोज करा जायछि सेठी रत्नगिरी कॉम्प्लेक्स टा बुद्धिस्ट पाई फेमस जोटी की महायान बुद्धिज्म एंड तंत्रसिज्म को प्रमोट करा जाए महायान बुद्धिज्म एंड तंत्रसिज्म को प्रमोट करा जाए ओके तो से हिसाब रे देखिया गले आंसर कोन आंसर होची आपनकर डी 1213 महायान बुद्धिज्म आपण जानिथिबे महायान बुद्धिज्म को हम को ग्रेट व्हीकल महायान बुद्धिज्म के हम कौन को ग्रेट व्हीकल एवं महायान बुद्धिज्म बिलीफ कौन करे बिलीफ ऑन द डिवाइन बुद्ध वाज ए डिवाइन यानी कि बुद्ध एज गॉड से माने करूतले आइडल वर्शिप करूतले से माने आइडल वर्शिप हिनायना बुद्धिज्म जो अपन करो छी हिनायना स्कूल ऑफ थॉट they believe on what human Buddhism या Buddha is not a god rather Buddha is a common human being that is the reason they did not worship Buddha or they did not do the idol worship of Buddha that is what आपण देखि परिबे तो महायाना एवं हिनायना सम को नेकी क्वेश्चंस आसे महायाना एवं हिनायना नेकी क्वेश्चन आपनकर आसे ता छडा आउट इनफॉरमेशन या क्वेश्चन मु आपन को पचरी पारे आउट क्वेश्चन होची गोल्डन ट्रायंगल बोली ओडिसा रो कहा को कुआ जाय गोल्डन ट्रायंगल बोली ओडिसा को कहा को कुआ जाय ये गोटे रहला आउट होची आपन को आउट क्वेश्चन आपन आंसर देबे डायमंड ट्रायंगल बोली आपन को कहा को कुआ जाय गोटे होची गोल्डन ट्रायंगल आउट होची आपनकर डायमंड ट्रायंगल बोली कहा को कुआ जाय ओके नेक्स्ट देखिबा दुईटी जका आंसर करिवे कमेंट रे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब्स द सिग्निफिकेंस ऑफ पंचुको इन ओडिसा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द सिग्निफिकेंस ऑफ पंचुको इन ओडिसा पंचुको जो हमर अछि तार सिग्निफिकेंस कोन पंचुको आपण जानिथिबे जो लास्ट 5 days of कार्तिक पूर्णिमा रो पंचुको marks the last 5 days of the Kartik month dedicated to Lord Vishnu पंचुको होजी last 5 days of Kartik month dedicated to Lord Vishnu second it is observed with rituals fasting and spiritual practices rituals fasting and spiritual practices okay third होजी कोन non-vegetarian food is traditionally avoided during Panchuko to celebrate the end of the Kartik Mahina. So all these three statements are correct. So D 1 to 3 is the correct answer. ठीक है जी. Panchuko signifies the concluding 5 days of Kartik month, a sacred period dedicated to Lord Vishnu. Second correct, devotees observe fasting, prayers and other spiritual practices during this period. 3 is correct. Non-vegetarian food is avoided during Panchuko even by those who did not follow strict abstinence earlier in the month. जो माने भी ता पूर्वरु भी नॉनवेज कंज्यूम करूथबे से माने लास्ट 5 days रे से माने कोन करंती कंज्यूम करंती नाही. नेक्स्ट देखिबा which of the following statement is correct about the run for unity event organized in Odisha. Run for unity event organized in Odisha. First statement को देखिबा. First, the event is held annually to celebrate Rashtriya Ekta Divas and the birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel. This event is held annually से कहूँ annually
to celebrate Rashtriya Ekta Divas and birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel. It was your first statement. Second statement, the Chief Minister of Odisha flagged off the event at Kalinga Stadium. The primary aim of the event is to promote fitness among school children and athletes. Around 3,000 participants, including students, athletes, took part in the event. गोटे पर गोटे स्टेटमेंट को देखिबा. फर्स्ट स्टेटमेंट होची राष्ट्रीय एकता दिवस या रन फॉर यूनिटी जोटा अछि सेटा हेल्ड एनुअली टू सेलिब्रेट राष्ट्रीय एकता दिवस एंड द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल. सो से हिसाब रे देखिया गले इस स्टेटमेंट होची करेक्ट एवं सेटा केबे सेलिब्रेट करा जाय 29th ऑफ अक्टूबर. 29th ऑफ अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस यूनिटी नेशनल यूनिटी डे जोटा में कहू. सेकेंड देखिबा ओडिसा रे चीफ मिनिस्टर मोहन माझी से इटा को कलिंग स्टेडियम रे इनागुरेट करथिले एंड फ्लैग्ड ऑफ द इवेंट. द प्राइमरी एम इज टू प्रमोट फिटनेस. ऑब्वियसली प्राइमरी एम होची रन फॉर यूनिटी रे कोन ना एकता द यूनिटी नेशनल यूनिटी नॉट promoting this fitness of school children athletes. से हिसाब रे थर्ड स्टेटमेंट को आपण इनकरेक्ट कहि परिबे. Around 3,000 participants including students athletes took part in the event. Around 3,000 participants including students and athletes took part in the events. So fourth statement is also correct. So answer is what? 1, 2 and 4. B is the correct answer. Now moving to the explanation part. राष्ट्रीय एकता दिवस is observed annually 29th October. Annually, प्रति वर्ष. The birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel. The run for unity is organized to commemorate this day. Okay. The Chief Minister of Odisha, Mohan Charan Majhi, flagged off the event at Kalinga Stadium. Third, the primary aim of the event is to promote national unity, not just for fitness. So, say हिसाब रे third statement incorrect थिला. Statement 4 correct. Approximately 3,000 participants including students athletes took part in the event. So answer is what? Answer is B, 1, 2 and 4. Next question. Which among the following received Ekalavya Puraskar for 2024? Which of the following received Ekalavya Puraskar for 2024? Ekalavya Puraskar जदि आपण देखिबे तांका भितरु किए पाइचंती जो ऑप्शंस गुडी आपनकर अछि. एकलव्य पुरस्कार पाइले प्रत्याशा राउत. एकलव्य पुरस्कार पाइचंती प्रत्याशा राउत. एटा मन रखथिबे प्रत्याशा राउत. चलन देखिबा. सॉरी प्रत्याशा राउत नुहे डहुजी प्रत्याशा रे. प्रत्याशा रे. प्रत्याशा रे. ओके सी इज द आंसर. देखिबा एक्सप्लेनेशन कोन. प्रत्याशा रे ओडिसा इज swimmer. Swimmer Pratyasha Ray was presented the 32nd Ekalavya Puraskar for 2024. 32nd Ekalavya Puraskar for 2024. On Sunday, Pratyasha received a trophy, citation and cash prize of 7 lakh for her impressive track record at the Ekalavya Puraskar Award ceremony held in the city. Okay, Ekalavya Puraskar for 2024 was given to swimmer Pratyasha Ray. C is the correct answer. Moving to the next. Which of the following statements about Dhauli Santi Stupa is are correct? Bhubaneswar ro कहबे गले भुवनेश्वर ही धौली शांति स्तूप आपन को देखिबा को मिलिबो जहा इंडिया एंड जापान रो कोलाबोरेशन रे धौली शांति स्तूप को बिल्ड करा जायतिला. क्वेश्चन ऊपर को जीवा. धौली शांति स्तूप इज लोकेटेड नियर भुवनेश्वर ओडिशा. मार्क्स द साइट फॉर हिस्टोरिक कलिंग वॉर. से जगह रे हिस्टोरिक कलिंग वॉर भी देखा जायतिला एवं दया नदी जो अछि आपनकर सेही कूल रे ही आपन को देखिबा को मिलिबो दया रिवर बाय एम्परर अशोका. The stupa was built in collaboration with Indian and Japanese Buddhist organization to symbolize non-violence and peace. To symbolize non-violence and peace. The edicts of Ashoka inscribed in Brahmi script. The edicts of Ashoka inscribed in Brahmi script can be found near the site, promoting messages of dharma and non-violence. The stupa is believed to have been constructed during the reign of Emperor Ashoka himself. So देखिबा गोटे पर गोटे जिंस जदि आपण देखिबे धौली पाखरे अशोकांकर एडिक्ट्स
भी सेठी मेंशन अछि एवं ब्राह्मी स्क्रिप्ट रे सेठी लिखा जाई अछि इनस्क्राइब करा जाई छि कोथरे ब्राह्मी स्क्रिप्ट कैन बी फाउंड नियर द साइट प्रमोटिंग मैसेजेस ऑफ धाम और धर्म और नॉन वायलेंस तेणु तांकर आइडिया आइडियोलॉजी को स्प्रेड करबा पई से इनस्क्रिप्शंस गुड़िक आपको देखा मिलूब स्क्रिप्ट गुड़िक आपको देखा मिल कैन बी फाउंड नियर द साइट प्रमोटिंग मेसेजेस ऑफ धर्म एंड नॉन वायलेंस ओके नाउ if you see the fourth statement the stupa is believed to have been constructed during the reign of emperor Ashoka himself the stupa is believed to have been constructed during the reign of emperor Ashoka himself धौली शांति स्तूप जोटा कह ओके तेणु सिंपली आप देखिए फोर्थ स्टेटमेंट आउ सेकंड स्टेटमेंट दे आर कंट्राडिक्टिंग टू ईच अदर फोर्थ एंड सेकंड स्टेटमेंट they are contradicting to each other second and fourth okay so this is what you will find so first statement को देखिबा एग्जामिन करिबा जदि आपण देखिबा फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट अछि 1 2 3 आपनकर आंसर हबा दरकार आंसर शुड बी ए 1 2 and 3 now coming to this part first होची करेक्ट कोन करेक्ट अछि धौली शांति स्तूप is located near Bhubaneswar Odisha is historically associated with the Kalinga war after which Emperor Ashoka embraced Buddhism and promoted peace. After embedded or embraced Buddhism and promoted peace. Okay, historically associated with the Kalinga war. कारण से दयानदी कूलर ही हितला. Stupa was constructed in the 1970s through collaboration between Indian authorities and the Nipponjan Myohoji Japanese Buddhist organization symbolizing peace and non-violence. So this is the collaborative idea between India and Japan. The third statement is near Dholi inscription of Ashoka's edict in Brahmi script. Dholi thare को inscription टी को language रे लिखा है को script रे लिखा है Brahmi script promoting dharma righteousness and non-violence dharma righteousness and non-violence and obviously fourth statement incorrect मैं आपको कही कारण 20th century यानी कि 1970s रे ही build करा जायतिला it was not by Ashoka आपण देखले जानि परियो सेठी modern architecture रे ही धौली शांति स्तूप तैयारी कराई छी ओके next which of the following are practices commonly observed during Panchuko in Odisha practices Panchuko in Odisha रे को भली भाव रे practice देखिबा को मिले सेटा देखिबा first होची chanting hymns dedicated to Lord Vishnu and Lord Jagannath chanting hymns dedicated to Lord Vishnu and Lord Jagannath floating miniature boats and rivers to honor Odisha's maritime history तो कार्तिक पूर्णिमा दिन आपण जो डंगा भसेबा जो कल्चर या ट्रेडिशन टी अछि ओनली टू कमेमोरेट द मैरीटाइम हिस्ट्री जो बाली जावा सुमात्रा इंडोनेशिया जो जाउथले सेतबळे ट्रेड करिवा पई साधाबो पो माने आपण जानिथिबे तो सेइटाकू ऑन दैट मेमोरी this maritime trade ame करू observing complete abstinence from vegetarian food for 5 days तो एटा को complete abstinence नहीं भाई तो mandatory obviously नुहे so depend करूची कहा ऊपर on the person people to people it varies so answer is a 1 and 2 only okay next explanation देखिए नवा devotees spend more time in prayers and chanting hymns dedicated to Lord Vishnu and Lord Jagannath during the Panchuko floating miniature boats as part of Boita Bandhana ritual and Kartik Purnima is a key tradition during Panchuko, commemorating Odisha's maritime legacy. Three is incorrect. Devotees abstain from non-vegetarian food, not vegetarian food during Panchuko. Okay, only they avoid non-vegetarian. Complete abstinence from vegetarian foods देजी तमने completely उपवास fasting no so incorrect seta 1 and 2 are correct now moving to the next question Lalit Giri
Which of the following statement about Lalitgiri is are correct? Lalitgiri. Lalitgiri is one of the oldest Buddhist site in Odisha, known for its ancient stupas and monasteries. Lalitgiri is one of the oldest Buddhist site in Odisha, oldest, known for its ancient stupa and monasteries. Use your first statement. Second, the site is part of the Diamond Triangle of Odisha, along with the Ratnagiri and Udayagiri. Excavations at Lalitgiri have uncovered relic caskets believed to contain the remains of Lord Buddha. ठीक अच्छे देखिबा आमे जदि आपण स्टेटमेंट को देखिबो जस्ट एबे पचारुथली कि समय पूर्व कि डायमंड ट्रायंगल कहला हमें कोन बुझू गोल्डन ट्रायंगल होची आपन जो भुवनेश्वर पुरी कोणार्क सेटा हेला डायमंड ट्रायंगल होची जोटा कि बुद्धिज्म सहित आपन एसोसिएट रत्नगिरी उदयगिरी एवं ललितगिरी रत्नगिरी उदयगिरी रत्नगिरी एंड ललितगिरी ये होची आपन डायमंड ट्रायंगल बोली कहा जाय Lalitgiri is one of the oldest Buddhist site in Odisha, known for its ancient stupas and monastery. Absolutely correct. And excavations at Lalitgiri have uncovered relic caskets believed to contain remains of Lord Buddha. ये भी होची आपनकर correct statement अछि. तो तीनोटी जगह statement होची आपनकर कोन correct 1 2 and 3 D is the correct answer. Okay, D is the correct answer. देखिबा Statement 1 is correct. Lalitgiri is one of the oldest Buddhist site in Odisha, featuring ancient stupas and monasteries that date back to the 1st century CE, showcasing region's Buddhist heritage. Second, Lalitgiri is part of the Diamond Triangle of Odisha. Diamond Triangle, a term used to describe three prominent Buddhist sites, Udauchi Ratnagiri, Udauchi Udayagiri, Udauchi Lalitgiri, सेटा को डायमंड ट्रायंगल बोली कहूचे. Statement 3 कोन ना archaeological excavations at Lalitgiri have uncovered relic caskets believed to contain sacred relics. सेटा हमको relics देखिबा को मिलिबो, possibly associated with the Lord Buddha, making it a site of immense historical and spiritual significance. Okay, so there are three, all those three statements are correct. So D is the correct answer. Next. Zirang is known to be the little Tibet of Odisha. Zirang, known to be the little Tibet of Odisha. It has provided a home for Tibetan settlers since China invaded Tibet in 1959. Padmasambha monastery is located here. Which of the following statements are correct? देखिए, first देखो, Zirang is known to be the little Tibet of Odisha. Zirang. तेणु ये करेक्ट स्टेटमेंट आपनकर जिरांग को आमे लिटिल तिब्बत बोली कहू. सेकंड होची इट हैज प्रोवाइडेड होम फॉर तिब्बतन सेटलर्स, ये भी आपनकर करेक्ट स्टेटमेंट. Padmasambhava monastery is located here, that is again absolutely correct. So all the three statements are correct. So answer is D, 1 2 and 3. So let's see the explanation. देखिबा हमें Statement 1 and 2 are correct. Jirang known to be the little Tibet of Odisha. Little Tibet बोली कहा जाए Jirang को, मन रखते बेटा को. Little Tibet, Odisha in India, which are also well known as the abodes of His Holiness of the Dalai Lama, but it has provided a home for Tibetan settlers since China invaded Tibet in 1959. कारण तिब्बत को चाइना तार टेरिटरी बोली ऑलरेडी ताको एक्सेप्ट करि नै कि तिब्बत इज नॉट, कारण आपण जानिथिबे तिब्बत ऑटोनोमस रीजन, दलाई लामा तिब्बत रे भी रहंती नाही, तो तिब्बत को चाइना तार टेरिटरी बोली माने. ओके, Tibetan settlers in China invaded 1959. Chandragiri, designated as the camp number 4, was where the first batch of Tibetans arrived on 1st May 1963. Tibetans have named this place Phuntsukling, which means land of plenty and happiness. Phuntsukling. Third statement, Padmasambhava monastery, also known as the Jirang monastery, is the major attraction of this region. Padmasambhava monastery or Jirang monastery. Okay. Jirang is the little Tibet of Odisha in India. Next, again, Panchuka Kartik Purnima. Jetu thila sitpei multiple questions asichi. What is the significance of Kartika Purnima in the Panchuka observance?
Devotees take a holy dip in rivers and ponds early in the morning, which is absolutely correct. It marks the conclusion of Odisha maritime trade expeditions. Sitme ame donga phusau seta to commemorate that. And third is the rituals on this day are solely dedicated to Lord Shiva, not solely dedicated to Lord Shiva, Lord Vishnu as well. Okay, Vishnu. खाली हम शिवांग तो नो विष्णु को भी पूजा करो तो सही हिसाब रे देखिया गले 1 and 2 आर करेक्ट ए 1 and 2 ओनली ओके थर्ड स्टेटमेंट होची इनकरेक्ट फर्स्ट होची करेक्ट कार्तिक पूर्णिमा इज ऑब्जर्वेंस या ऑब्जर्व विथ अर्ली मॉर्निंग होली डिप प्योरिटी बिलीव टू प्यूरिफाई द सोल एंड बॉडी बोईत बंदाण सेलिब्रेट ऑन कार्तिक पूर्णिमा ऑनर ओडिशा's maritime history and ancient day trade trade with Southeast Asia, जमती कहते Indonesia, Bali, Java, Sumatra, etc. While Kartika Purnima is multifaceted religious day, is primarily focused on Lord Vishnu and Lord Jagannath, not solely on the Lord Shiva. So Shiva, Jagannath हुंतु, Vishnu हुंतु, ये सबों को पूजा करा जाए. Okay. Next देखिए बा. Next question. Which statement about Boita Bandhana observed on Kartika Purnima? Which statement about Boita Bandhana observed on Kartika Purnima is correct? Okay. It symbolizes the maritime voyages of Odia traders to Southeast Asia. Boita Bandhana, जोटा कि डंगा भसा जोटा में को कौन सिंबलाइज करे ना मैरीटाइम वॉयक्स यानी कि जो ट्रेड करा जाउथला ओडिसा रो जो माने थिले से माने सी एक्सपेडिशन करिकी साउथ ईस्ट एशिया सहित ट्रेड करूथले टू कमेमोरेट दैट इट कमेमोरेट्स ओडिसा's ancient military expedition. Miniature boats are set afloat on rivers and ponds as part of the ritual. Third statement is correct, but it a purely trade expedition thila, not the military expedition. Okay, सही हिसाब रे देखिया गले 1 and 3 are correct. 1 and 3 are correct. C is the correct answer. C. Military nathila seta. Boita Bandhana is a tribute to the seafaring history of Odisha, recalling the voyages of ancient traders. Okay. Second, the ritual involves setting afloat miniature boats, symbolizes historical maritime activities. Statement 3, it is statement 3 re achi, it is 2 re achi, right? Boita Bandhana celebrates trade, not maritime expeditions. Next. Punthare Panchuko. Which of the following reflects the spiritual practices during Panchuka? Devotees offer flowers and fruits to Jagannath. Families maintain a complete vegetarian diet even if they did not abstain earlier in the month. Worship is centered on the deities associated with the Kartikeya. Kartika Purnima re Kartikeyan ko puja kara jaye ki? Obviously, no. Okay. कहाँ को पूजा करा जाए? Jagannath, Vishnu, Shiva. So devotees offer flowers and fruits. That is also correct. Families maintain a complete vegetarian diet even if they did not abstain earlier in the month. That is absolutely correct. But Kartikeya is not worshipped. So answer is 1 and 2. Okay. So you explanation. 1 correct, 2 correct, 3 incorrect. Which of the following statements about urbanization in Odisha is correct? Which of the following statements about urbanization? Urbanization of the first statement. Bhubaneswar's population has exceeded 1 million driven by the economic opportunities. 1 million. Okay. Next. Odisha's urban population percentage decreased between 2001 to 2011. Industrial hubs like
Jharsuguda, Anuggul, Talcher play a significant role in urban growth. Which of the statements are correct? Okay. The first statement देखिए Bhubaneswar's population has exceeded 1 million. 1 million driven by economic opportunities. Absolutely correct. Economic opportunities ପାଇଁ धीरे धीरे population बढ़ी बढ़ी चलची भुवनेश्वर रे 1 million. So जो urban population percentage has decreased. Obviously not decreased. Decrease तो नुहे कारण decrease ହେଇଥିଲେ 1 million केबे क्रॉस करि नथंदा. First and second statement itself contradict करछन्ती. Second को incorrect कहि परिबे. Third देखो industrial hubs like Jharsuguda, Anuggul, Talcher play significant role in urban growth. That is again correct कारण जेहेतु industrialization कारण urbanization पछरे गोटे बड़ reason होची कोन industrialization नियाती दरकार. Industrialization drives urbanization. It's not that urbanization drives industrialization, right? Industrialization drives urbanization. So सही हिसाब रे देखियो गले 1 and 3 statements are correct. C is the correct answer. Okay. Second statement को देखियो Bhubaneswar has emerged, explanation देखो, as a significant urban center with a population exceeding 1 million, largely due to the job opportunities and infrastructure development. Statement 2 is incorrect. Odisha's urban population percentage grew from 14.97% in 2001 to 17% in 2011. 2001 रे केते थिला 14.97% urban population थिला. वर्तमान सेटा बढ़ी के थी 17%, that is in 2011. Now it might have increased to, let's say, 20 to 25%. Okay. Simply statement 3 देखो, industrial hubs like Jharsuguda, aluminum, Anuggul, Talcher, power and steel have attracted workers contributing to the urbanization. So answer is 1 and 3. C is the correct answer. Next, which initiatives are part of the Odisha's efforts towards urban development? Which initiative part of the Odisha's efforts towards urban development? First देखो, smart city projects in Bhubaneswar and Raulkela, rainwater harvesting and green zone expansion, exclusive focus on housing for the urban elite. Answer कौन? कोथि पाई urban development देखिबा को मिलुची. Obviously smart city projects, if you provide a better facility, better what we call or better facility, urban facility, Bhubaneswar and Raulkela, steel city Raulkela and the Bhubaneswar the capital, सिटी पाई अपन को urban development अधिक देखिबा को मिलिबो. Rainwater harvesting and green zone expansion. Green zone expansion is another factor, and rainwater harvesting to conserve water or water management जोटा में कहूचे. Rainwater harvesting. Exclusive focus on the housing for the urban elite. Obviously not. Not urban elite. कम पाई ही अपन urbanization बड़ी बड़ी चलची, urban development ही चलची. Generally, if you see exclusive focus on housing the urban elite जो कहूची, सेटा तो incorrect. But अपन देखिबे urban areas रे सरकार कौन कुछंदी गोटे प्रोजेक्ट नहीं आसुचंदी जेमती देखिबे आपनकर लोअर इनकम ग्रुप LIG क्वार्टर्स LIG फ्लैट गुडी को सरकार बनाउछन सो दैट लो इनकम ग्रुप से माने अकोमोडेशन पई इसम देखिए मिडिल इनकम ग्रुप पई भी आपण बनाउछंदी सरकार एवं देखिबे HIG ये भी बनाउछ सो LIG MIG HIG ई सब टाइप रो सरकार ताको बनाउछन तो लोक मानकर सेटलमेंट पई. ओके, सो आंसर इज व्हाट 1 and 2. Third statement is incorrect. Explanation देखिबा Bhubaneswar and Raulkela are the smart city mission focuses on digital services, infrastructure upgrades and sustainability. Okay, digital services, infrastructure upgrades and sustainability. Second statement is also correct. Integrating eco-friendly initiatives like rainwater harvesting, expanding green zones, sustainable urban growth, आपनकर जो वेस्ट मैनेजमेंट ये सब जिनस गोटे बड़ फैक्टर. स्टेटमेंट 3 जब देखिबे सेटा होच इनकरेक्ट. ओडिशा एम्फासाइज अफोर्डेबल हाउसिंग थ्रू प्रोग्राम्स लाइक प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन टारगेटिंग ब्रॉडर पॉपुलेशन सेगमेंट्स इंक्लूडिंग स्लम ड्वेलर्स.
Okay, so statement 3 is incorrect. आंसर थिला आपनकर 1 and 2 statements are correct. Next देखिबा, which of the following correctly links urban challenges in Odisha with their causes? Urban challenges in Odisha with their causes. First one is the traffic congestion, rapid vehicle density increase. First problem कौन, first challenges कौन, traffic congestion. Traffic congestion फल कौन होची, rapid vehicle density increase. Okay, कारण vehicle density grow जेमती करूची, road सेतिकी expand हो नहीं, जोति पाएं कि you will find traffic congestion. Next, slum growth, lack of affordable housing. Slum growth, lack of affordable housing. Okay, तो जेतु lack of affordable housing अच्छी, सेत पे आपने देखिए small जो slum grow करूची काफी people they're migrating from the rural India to जैसे rural Odisha to urban Odisha for the livelihood opportunity, for the better living standard. जो पाएंगे सेमान को proper जो habitat यानी कि proper dwellings मिल पारु नहीं. As a result, they are preferring to start life in slums. And as a result, जोटा कि आपनकर sanitation issue ई सब जिनस देखिबा को मिलुची. Air pollution in Angul, Talcher, excessive deforestation. Air pollution जो आपनकर देखिबा को मिलुची, excessive deforestation एटा गोटे factor नुहे. ओके, सेटा को देखिबा. So आपनकर कोन हो आंसर होची 1 correct one, second भी correct one. So 1 and 2 only. Third काहे कि incorrect, कारण एयर पोल्यूशन जो अनुगुल तालचर आपन को देखिबा को मिलुची एयर क्वालिटी बैड या वर्स एयर क्वालिटी नॉट ड्यू टू एक्सेसिव डिफोरेस्टेशन, rather industrial emission. Okay, carbon emission and other gases. Statement 1 is correct. Cities like Bhubaneswar and Cuttack face the traffic congestion due to a rapid increase in vehicle numbers, especially on the Bhubaneswar-Cuttack highway. Statement 2 correct. Lack of affordable housing has contributed to the growth of slums, with about 24% Bhubaneswar's population living in informal settlements. Informal in the sense ki not proper colony, not proper like approval of municipalities. They are living in slums. Okay, and temporary settlements. Air pollution in Anugul Talcher due to industrial emissions, not deforestation. Next. Which economic activities are key drivers of urbanization in Odisha? Key drivers of urbanization in Odisha. Urbanization ro main purpose kono या drivers kono? First देखंतु, first होची आपनकर IT sector development in Odisha in Bhubaneswar. Obviously absolutely correct. IT sector बहुत गुडे कंपनी आपनकर आसेलानी, गोटे STPI भी अछि, Software Technology Park of India. So IT sector is growing. कारण आपन जानिथिबे जदि ईस्टर्न इंडिया रे आपन देखिबे कोलकाता somehow has got the saturation. Now companies have started moving towards the another eastern state, that is the Odisha, that is the Bhubaneswar. Second, SEZ based export industries around the Paradip. Again, that is absolutely correct. Urbanization ro reason hochi kono na Paradip but export industry based SEZ develop kara jaichi, and Paradip is one of the major port in India and Odisha's only major port. Apan koi paribe Odisha's only major port hochi Paradip, only major port. बाकी जो पोर्ट गुड़िक अच्छी जमती धामरा गोटे पोर्ट अच्छी, जमती गोपालपुर गोटे पोर्ट अच्छी, जमती अस्तरंग पोर्ट अच्छी, ये सब अस्तरंग पोर्ट हो इन डेवलपिंग स्टेज. धामरा गोपालपुर दे आर पोर्ट्स बट नॉट द मेजर पोर्ट्स. मेजर पोर्ट हो बल्क हैंडलिंग ऑफ बल्क एक्सपोर्टेड या बल्क कार्गो जोटा में कौचे एक्सपोर्टेड मटेरियल्स. ओके, तो एटा होची पारादीप जोटे मेजर पोर्ट जोथि पाएंगे सिटी मध्ये अर्बनाइजेशन आपन को देखिबा को मिलिबो. एग्रीकल्चरल इंटेंसिफिकेशन इन रूरल एरियाज. तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चरल इंटेंसिफिकेशन जदि हुए रूरल एरियाज रे सेथि पई जे अर्बनाइजेशन बढ़िबो, दैट इज नॉट करेक्ट. ओके, इंडस्ट्री जदि हुए तबे डेफिनेटली अर्बनाइजेशन बढ़िबो.
not for the agriculture. So agriculture mane ruralization या rural area will be growing, not the urbanization. इठी आंसर होची आपनकर A. Explanation को जदि हमें देखिबा, IT sector in Bhubaneswar with companies like Infosys, TCS attracts a skilled workforce driving urbanization. Second is correct. Special economic zones like Paradip Port Special Economic Zone foster export based industries, contributing to urban growth around the port cities. Urban growth around the port cities. Statement 3 is incorrect. Urbanization driven more by industrial and services sector. Urbanization is driven more by industrial and services sector than by agricultural intensification in the rural area. So answer is what? 1 and 2. That means A is correct. Moving to the next question. Which of the following environmental concerns are linked to Odisha's urbanization? Environmental concern linked to Odisha's urbanization. तीनटी स्टेटमेंट अच्छे देखिए वन बाय वन. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज डिफॉरेस्टेशन अराउंड एक्सपांडिंग सिटीज. दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. कारण जति डेंस ऑफ फॉरेस्ट थिला से डेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट हैज बीन reduced only for this. Your city is expanding, more and more areas जो गुड़िक जंगल गुड़िक भी थिला से गुड़िक we are like deforesting to build human settlement and all. Second, river pollution due to untreated waste. That is again absolutely correct. Untreated waste. Decline in industrial activity in cities like Jharsuguda. Okay. So decline in industrial activity in cities like Jharsuguda. से कुछ कि ओडिशार urbanization सहित concern challenges कौन होची कि industrial activity झारसुगुड़ा रे कमी जाइछि. एटा simply उल्टा. I mean the reverse is the case. झारसुगुड़ा रे industrial कमिनी, industrial growth जेहेतु होची तेणु ओडिशा रे urbanization धीरे धीरे बढ़ी बढ़ी चलछि. So answer is 1 and 2, A only. Third statement is incorrect. आउट जिन से मु कहि रखे, if you see the national average in terms of urbanization, 1/3 होची आपनकर national average, यानी कि 2/3 आपनकर जदि rural area रे रहउचंदी population, 1/3 रहउचंदी population urban area रे. Similarly, if you compare with the Odisha in terms of urban people and rural people, Odisha रे urban area रे रहउचंदी को केते percentage? Around 15%, and 85% of people are living in the rural area. So in comparison to the national average, if you see, the process of urbanization in Odisha is much slower. Okay, much slow in Odisha in comparison to the national average, right? The reason kono na due to delay in the process of industrialization. Industrialization always drives the urbanization. If you compare with this इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जदि आप देखिए ब्रिटेन रे जो आप स्टार्ट होता जस्ट आफ्टर रेनेसा से अर्बानाइजेशन जो सिटीज गुड़िक जो मैनचेस्टर आप देखिए हो जो सिटीज गुड़िक कौन पर डेभलप होता ओनली बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रीज. सिमिलरली आप इंडिया देखो जो सिटीज गुड़िक आप देखते कानपुर, वाराणसी, सेमती आप देखिए कोलकाता को देखो ये इंडस्ट्रीज ही सिटी धीरे धीरे ग्रो करथिला. ओडिशा रे यू वोंट फाइंड सच cities with big industries except एबे किछि किछि हमें स्टार्ट करूचे या राउरकेला गोटे कहले चलिबो जोति पई कि एक्सपांड सेटा हेछि. एनीवे, सो 1 and second, first and second are correct and third statement is incorrect. So answer is obviously A. First देखंतु, urban expansion in Odisha has led to deforestation and loss of green spaces or green coverage. Second होछि river pollution from untreated urban waste is a major environmental concern in cities like Raulkela and Sambalpur. Third statement, urbanization has not caused a decline in industrial activity. Instead, industrial growth has driven urbanization in Odisha. Okay. Now moving to the next question. Which of the following statements correctly explains why Odisha does not have a state legislative council or what we call the Vidhan Parishad? ओडिशा होची आपनकर यूनिकैमरल इन नेचर. ओडिशा होची आपनकर यूनिकैमरल इन नेचर. बाइकैमरल मीन्स द लेजिस्लेटिव आपनकर काउंसिल
and legislative assembly to amar achi, but we do not have legislative council, what we call the Vidhan Parishad. So let's see those three statements. The first one is Indian constitution does not mandate a state legislature council for every state. Its creation depends on the state legislature's resolution and parliament's approval. जदि आपण कॉन्स्टिट्यूशन रे देखिबे सेभली कोनोसी मेंशन करा जाय नाही. कॉन्स्टिट्यूशन रे जदि आपण देखिबे इटा मेंशन करा आइछि कि पार्लियामेंट इज बाइकैमरल इन नेचर with the lower house and the upper house. But if you see the state in the constitution regarding the state, there is no mention of unicameral or bicameral. Unicameral भी ही पारे, bicameral भी ही पारे, provided state legislative assembly रो या state resolution रो स्टेट लेजिस्लेचर रो गोटे रेजोल्यूशन हवा दरकार एवं से रेजोल्यूशन पास करके जतबेला आपण पार्लियामेंट को पठेबे पार्लियामेंट शुड गिव द अप्रूवल एज वेल. ओके, पार्लियामेंट शुड गिव द अप्रूवल एज वेल. तो ये जिनसटा हवा दरकार. तो सही हिसाब रे देखिया गले द फर्स्ट स्टेटमेंट इज आपनकर करेक्ट आपण कहि परिबे. इफ यू कमिंग टू द सेकंड स्टेटमेंट, ओडिसाज लेजिस्लेटिव असेंबली हैज नॉट पास्ड ए रेजोल्यूशन टू एस्टैब्लिश ए लेजिस्लेटिव काउंसिल. Odisha's legislative assembly has not passed a resolution to establish a legislative council. या पूर्वरु ओडिशा जो previous government थिला से माने पास तो करी चंदी, एमती नुही कि पास करी नहांती, से माने resolution तो पास करी चंदी legislative council, but सेटा pending अच्छी आपण कहि परिबे कोठी पार्लियामेंट पाखरे पार्लियामेंट तरफरु सेबली किछि अप्रूवल दिया जाई नाही. तो रिसेंटली जदि आपण कहिबे ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली हैज नॉट पास्ड रेजोल्यूशन टू एस्टैब्लिश अ लेजिस्लेटिव काउंसिल. जो नुआ गवर्नमेंट आपनकर आसी तांको द्वारा एभली कोनसी प्रोविजन रे पास करा जाय नाही. बट इफ यू कंपेयर विथ द ओल्ड गवर्नमेंट, द प्रीवियस गवर्नमेंट पास्ड दिस रेजोल्यूशन टू फॉर्म ए लेजिस्लेटिव काउंसिल, कारण तर मेन पर्पस थला जो लीडर्स माने अछंती सेमानको सेटलमेंट करेबार. तो से हिसाब रे देखिया गले स्टेटमेंट को आपण करेक्ट भी कहि परिबे न्यू गवर्नमेंट पाई, बट एमते नुहे कि केबे भी पास करा जाय नै. तो से हिसाब रे एटो आपण ठीक धरि कि चालंतु. मु सेपे आपण को दुईटी जाक चित्स कहि देली एठी. थर्ड देखो, द लेजिस्लेटिव काउंसिल आर ओनली अलाउड इन स्टेट्स विथ ए पॉपुलेशन एक्सीडिंग 10 million as per the constitutional guidelines. ए भली कोनोसी स्टेटमेंट या कंडीशंस आपनकर कॉन्स्टिट्यूशन रे मेंशन नाही. द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट specify such guidelines. Okay, तो सही हिसाब रे स्टेटमेंट होची इनकरेक्ट. फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट होची आपनकर करेक्ट. A 1 and 2 only. Now moving to this explanation, the first होची देखंतु Indian constitution allows states to decide whether to have a legislative council through article 169, whether to have a legislative council through 169. 169 रे मेंशन अछि कि legislative council हेई पारिबो. It requires a resolution passed by the legislative assembly and subsequently approved by the parliament. आपण देखिबे 6टी स्टेट्स रे हमर थिला. जम्मू कश्मीर को तो टेरिटरी कर दिया गला. जेमते आपण देखिबे यूपी, महाराष्ट्र, ई सब स्टेट्स रे आपनकर बाइकैमरल इन नेचर. बाइकैमरल इन नेचर. स्टेटमेंट 2, Odisha has not passed a resolution in its legislative assembly to establish a legislative council, which is why it does not have one. Okay, तो ये भी गोटे स्टेटमेंट कि रेजोल्यूशन अपन को फर्स्ट पास करबा को पड़िबो. थर्ड इज there is no population requirement in the constitution for establishing legislative council. कोनोसी population रो requirement नहीं या population रो criteria किछ नहीं. States like Goa with much smaller population also have the option to create a council if they meet the other procedural requirements. तेणु गोवा गोटे छोटो स्टेट हिसाब रे भी सेमान को भी ये फैसिलिटी दिया जिवो जदी सेमाने तांकर एठी पास कर देले कोन आपनकर resolution in assembly. Okay, now moving to the next question, which of the following statements about Chandipur in Odisha are correct? Chandipur विषय रे देखिबा. Chandipur is known for its unique receding sea phenomenon, where the sea water recedes up to 5 kilometers during the low tide. Chandipur विषय रे ये जो स्टेटमेंट ही आपनकर यूपीएससी रे भी क्वेश्चन पचरा जाइतला कि चांदीपुर इज नोन फॉर इट्स यूनिक रिसीडिंग सी
phenomenon where the sea water recedes up to 5 kilometers during the low tide. 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर्यंत पछकू सी वाटर आपणकर चली जाए द रीजन हूँ लो टाइड पाई जो कम जुआर बोले आम कहूना लो टाइड से आपन को देखा मिले. नेक्स्ट देखा it houses the integrated test range where various missile tests including those of Agni, Prithvi and missiles are conducted. Wheeler Island एठी आपन को देखा मिलूला बर्तमान सेटा चांदीपुर क्षेपणास्त्र जोटा अच्छी व्हीलर आइलैंड सेठी हमर थिला सो जोथि पई कि आपन को सेठी आपन को ई सब देखिबा को मिलिबो कोन टेस्टिंग इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज देखिबा को मिलिबो. ओके चांदीपुर क्षेपणास्त्र जोटा अच्छी टेस्टिंग सेंटर. थर्ड चांदीपुर इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ड्यू टू इकोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस. यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट चांदीपुर को जदियो जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस या इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस बट तक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बोली स्टेटस दिया जाई नाही. यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रो स्टेटस दिया जाई नाही. ओके देखिबा एक्सप्लेनेशन कोन. सो आंसर होची ए 1 and 2 ओनली. Chandipur is famous for its vanishing sea phenomenon where the sea recedes significantly during low tide creating a fascinating and rare ecological spectacle. Statement 2 is correct. Chandipur hosts the integrated test range key defense facility where India tests various ballistic missiles including Agni, Prithvi and BrahMos. Agni, Prithvi and BrahMos BrahMos को testing करा जायथिला कोडी चांदीपुर रे. And the third one is while Chandipur is ecologically significant unique site it is not designated as the UNESCO World Heritage Site. एटा को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बोली आमे कहू नाही या ताको स्टेटस दिया जाई नाही. ओके which of the following statements about Chilika Lake is are correct? Chilika या Chilika whatever may be statements गुड़ा देखिए. Chilika Lake is the largest brackish water lagoon in India located along the eastern coast of Odisha. Largest brackish water खर या लुणी जल बोली कह जाए. फ्रेश वाटर लेक भी अच्छी जमी अंशुपा इज ए फ्रेश वाटर लेक बट एटा हूँ लुणी जल brackish water. It is a designated Ramsar site due to its ecological importance and is a critical habitat for migratory birds. Ecological significance पाई रामसर साइट र स्टेटस तो दिया जाई छी. मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड रे बेटा को इंक्लूड करा जायतिला आपण माने जानिथिबे हाई अमाउंट ऑफ सिल्टेशन पाई वर्तमान आ मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड रे नाही बट रामसर साइट हिसाब रे एटा को डेजिग्नेट करा जाई छी. एवं विंटर समय रे आपण देखिबे साइबेरिया रो माइग्रेटरी बर्ड्स माने आसंती. सो पर्टिकुलरली नळबण आइलैंड या नळबण वाइल्ड लाइफ या बर्ड सैंक्चुरी भी सेटा को आजो नळबण बर्ड सैंक्चुरी. Chilika is known for its rich biodiversity, including rare species like the Irrawaddy dolphin and several species of flamingos. Irrawaddy dolphin भी अपन को चिलिका रे देखिबा को मिलिबो and flamingos भी देखिबा को मिलिबो. सेही हिसाब रे देखिबे 1, 2 and 3 all the three statements are correct. All the three statements are correct. Chilka Lake indeed a largest brackish water lagoon in India located along the eastern coast of Odisha spreading across Khurda, Ganjam and Gajapati district. तीनोटी जाका डिस्ट्रिक्ट रे आपन देखिबा को मिलिबो खुर्दा, गंजाम and Gajapati district. Chilka Lake is Ramsar site which means it is recognized as a wetland of international importance due to its unique ecological value and the large number of migratory birds and supports. The lake is home to rich biodiversity including rare species such as Irrawaddy dolphin, flamingos, making it a key area for both ecological conservation and bird watching. Okay. Next देखिबा. Which of the following are correct about the Godavari Mishra Adarsh Prathamika Vidyalaya Yojana launched by the Odisha government? Godavari Mishra Adarsh Prathamika Vidyalaya launched by the Odisha government. Okay. First statement, the scheme aims to construct 7,794 modern primary schools across Odisha's panchayats. 6,794 modern primary schools. 6,794 modern primary schools. Second,
The initiative focuses on creating ideal learning environments to enhance children's linguistic and arithmetic skills inspired by the Satyavadi Bana Vidyalaya. Third, the scheme will only focus on constructing new schools, will not include the renovation of the existing school. So गोदावरी से मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय योजना जोटा अच्छी तार मेन ऑब्जेक्टिव कौन एम कौन ना 6794 मॉडर्न प्राइमरी स्कूल को डेवलप करवा अक्रॉस द ओडिशा पंचायत रे 6794 मॉडर्न प्राइमरी स्कूल को डेवलप करवा नंबर 1. नंबर 2 यू कैन सी आइडियल लर्निंग एनवायरनमेंट टू एनहांस चिल्ड्रन लिंग्विस्टिक यानी कि लैंग्वेज नॉलेज अरिथमेटिक स्किल मैथमेटिक्स इंस्पायर्ड बाय द सत्यवादी वन विद्यालय. सत्यवादी वन विद्यालय जोटा आपनकर स्वदेशी मूवमेंट टाइम रे हितला 1909 रे सी ता द्वारा इंस्पायर ही कि एटा को गोदावरी से मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय योजना को डेवलप करा जाय छै. थर्ड स्टेटमेंट जदि आपण देखिए द स्कीम विल ओनली फोकस ऑन कंस्ट्रक्टिंग न्यू स्कूल्स. The scheme only focuses on constructing new schools and not renovate. Obviously, not in renovate तो नुहे तो new schools भी खोला जीवो and renovate करा जीवो आपनकर कोन ना 45 जो schools गुडी को थिला old schools गुडी को थिला ताकू renovate करा जीवो. से हिसाब रे देखिया गले 1 and 2 statements are correct. A is the correct answer. ठीक explanation देखिबा. गोदावरी से मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय योजना is set to construct 6794 modern primary school across Odisha Panchayat, ensuring that every child has access to quality education. The initiative is inspired by the Satyavadi Bana Vidyalaya, improving linguistic arithmetic skills to prepare children for further education. The scheme not only focuses on constructing new schools but also includes plans to preserve and renovate 45 heritage schools, preserving Odisha's educational legacy. 45 heritage schools, okay, 45 टी heritage schools को renovate करा जिवो, preserve करा जिवो and preserving Odisha's educational legacy. Next देखियो the Daha reservoir is located in which district? Daha reservoir जोटा अछि सेटा आपण गंजाम डिस्ट्रिक्ट रे आपण को देखिबा को मिलिबो. गंजाम डिस्ट्रिक्ट, ओके, गंजाम डिस्ट्रिक्ट रे आपण को डाहा रिजर्वर देखिबा को मिलिबो. गंजाम, the Daha reservoir in Bhanjanagar town of Ganjam district would soon to be renovated at a cost of rupees 62 crore. The reservoir is vital for irrigating farmland in the Ganjam district. The dam intercepts a catchment of 167 square kilometer. Daha Dam is homogeneous rolled field earth dam of length of 3,450 meter built across river Daha and Kalinga, tributaries of Loharkhandi river in Rushikulya basin. Loharkhandi river in Rushikulya basin. Okay. Next देखिबा. Which of the following statements about the Machkund river are correct? Machkund. Machkund river is a tributary of the Godavari river and flows into Jalapur reservoir located on the Andhra Pradesh-Odisha border. Machkund river is a tributary of the Godavari river and flows into the Jalapur reservoir located on the Andhra Pradesh-Odisha border. The Machkund river is known for the Matsya Tirtha waterfall, which is 175 meters high and located near a rocky outlet called Duduma. The Machkund river becomes a boundary between Andhra Pradesh and Telangana near Ondra Gada या Ondra Gada आपण कहि परिबे. तो देखिबा हमें देखो the Machkund river is a tributary of Godavari river and flows into Jalapur reservoir located on the Andhra Pradesh Odisha border. Sei hisab re eta hoji statement hoji correct. The Machkund river is known for the Matsya Tirtha waterfall, Matsya Tirtha, which is 175 meters high
located near a rocky outlet called Duduma. Okay, से हिसाब रे भी ये होची आपनकर second statement होची correct. Machkund river becomes the boundary between Andhra Pradesh and Telangana near Ondragada. तो एटा होची आपनकर incorrect. So answer होची आपनकर 1 and 2 only. देखिबा The Machkund river is indeed a tributary of Godavari river. Machkund river होची कोन ना tributary कहारो Godavari river रो originating in the Mudugal hills of Visakhapatnam and flowing into the Jalaput reservoir located on the Andhra Pradesh and Odisha border. Okay. Originating in the Mudugal hills of Visakhapatnam and flowing into the Jalaput reservoir. Jalaput reservoir के move करूची कोडी सेटा आंध्र एवं ओडिशा बॉर्डर रे सेटा हमें मत्स्य तीर्थ वाटरफॉल भी कहो रिवर को हमें कौन कहो मत्स्य तीर्थ वाटरफॉल लोकेटेड नियर द रॉकी आउटलेट ऑफ डुडुमा वाटरफॉल रो हाइट केते 175 meters high and is a prominent feature in the area. Statement 3, the Machkund river becomes the boundary between Andhra Pradesh and Odisha, not between Andhra Pradesh and Telangana. The river forms the boundary near Odragada. Okay. तो फर्स्ट स्टेटमेंट रे जो आपनकर थिला आंध्र प्रदेश और ओडिशा बॉर्डर इठी आंध्र प्रदेश तेलंगाना बॉर्डर देइथिला त जेहेतु आंध्र एंड ओडिशा बॉर्डर करेक्ट अछि तनु सेत पई एटा होची इनकरेक्ट द रिवर फॉर्म्स ए बाउंड्री नियर ओंड्रागढ़ ओके सो आंसर इज ए 1 and 2 only. Next, which of the following statement about the Indian bison census conducted at Devigarh Wildlife Sanctuary is are correct? Devigarh Wildlife Sanctuary. Devigarh Wildlife Sanctuary कोठी अछि बरगढ़ रे ओके Devigarh Wildlife Sanctuary कोड देखा जाउछि बरगढ़ रे. The census recorded a total of 659 Indian bisons with approximately 30% of the population being juvenile. First statement अछि. Second statement कोन अछि? The census was carried out on horseback covering forest roads, trails and meadows. Indian bison is classified as vulnerable by the International Union for Conservation of Nature and is listed as the Schedule 1 animal under the Wildlife Protection Act 1972. Okay. तो the first statement होची जे आमे देखिबा गौर यानी कि इंडियन बाइसन रा सेंसस हेतिला सेंसस रे टोटल 659 इंडियन बाइसन with approximately 30% of the population being juvenile यानी कि adult जोटा अछनी young जो माने अछंदी तनु ये होची करेक्ट स्टेटमेंट 659 इंडियन बाइसन आपन को देखिबा को मिलिबो इंडियन बाइसन आपन को ऑलमोस्ट प्लेन्स रे देखिबा को मिलिबो जो सेंट्रल इंडिया रो प्लेन्स रे देखिबा को मिलिबो छत्तीसगढ़ हो ओडिशा हो मध्य प्रदेश हो महाराष्ट्र हो ये जो पूरा जो प्लेन्स अछि आपन को ए कंप्लीट एरिया रे एवं एटा होची इंटरलिंक आपन केवल स्टेट रा बॉर्डर तो अछि बट आपन देखिबे काफी इंटरली कनेक्टेड फॉरेस्ट ही गुडी को अछि तनु इंडियन बाइसन पूरा एरिया रे आपन को देखिबा को मिलिबो इंडियन बाइसन Sikuchi, the census was carried out on horseback, covering forest roads, trails, and meadows. Obviously, not horseback, rather foot. चली चली की सेमाने कौन करथिले एटा को सेंसस को ऑर्गेनाइज करथिले. Indian bison is classified as vulnerable. That is absolutely correct. IUCN जो आपनकर अछि रेड लिस्ट या रेड डेटा बुक सेठी एटा को vulnerable रे रखा जाय छै vulnerable. Okay. As per the schedule 1, they are highly protected. Wildlife Protection Act 1972. So answer जदि आप देखिबा सेकंड स्टेटमेंट होची आपनकर इनकरेक्ट थर्ड स्टेटमेंट होची करेक्ट फर्स्ट एंड थर्ड ए इज द आंसर तरो ये देखिबा एक्सप्लेनेशन The census recorded 659 Indian bison with about 30% of them being juvenile, indicating a growing and healthy population, number one. Second was incorrect. The census was carried out on foot, not on horseback, and covered various habitats like forest roads, trails, meadows, and water bodies. The Indian bison is classified as a vulnerable species, IUCN, and listed under the Schedule 1 of the Wildlife Protection Act 1972. Providing absolute, highest level of legal protection. Okay. Moving to the next.
Which of the following statement regarding the Odisha's government new policy on menstrual leave for female employees is are correct? The new policy grants female employees 12 additional days of casual leave annually for menstrual care in addition to the standard of 15 days of casual leave. Okay, 15 days of casual leave. The extra 12 days of casual leave are transferable and can be accumulated if not used within a month. The policy applies to the female employees up to the age of 55 years. ठीक अछि आंसर देखियो हमें फर्स्ट स्टेटमेंट देखो न्यू पॉलिसी ग्रांट्स फीमेल एम्प्लॉइज 12 एडिशनल डेज ऑफ कैजुअल लीव annually for menstrual care in addition to the standard of 15 days casual leave. तो जो 15 days casual leave अछि ता सहित 20 days additional leave मिलिबो सो हिसाब रे स्टेटमेंट होची करेक्ट. Extra 12 days of casual leave are transferable and can be accumulated if not used within a month. ये जो स्टेटमेंट दीची कि यदि आपण यूज न करिवे 12 days leave are transfer एजिबो and can be accumulated if not used within a month. यदि मास भीतर यूज करि परिबो नाही तबे सेटा होची कोन 12 days of casual leave are non transferable and cannot be accumulated. तो आपन को नबा को पड़िबो दे नन नबे सेटा लैप्स करि जो लैप्सेबल. The policy applies to female employees up to age of 55. That is correct. So answer is what? Answer होची 1 and 3. Second statement is incorrect. Okay. The new policy provides female employees with an additional 12 days of casual leave annually for the menstrual care on top of the standard of 15 days. Incorrect second statement in the extra 12 days of leave are non-transferable and cannot be accumulated if not used within the given month. Statement 3 is correct. The policy applies to female employees until they reach the age of 55. Okay. Which of the following statements are correct regarding the new scheme Go Mata launched by the Odisha government? New scheme Go Mata. Go Mata scheme will be implemented for the 3 years. Go Mata scheme will be implemented for 3 years with a budget outlay of 342.65 crore. The scheme aims to provide livestock farmers with veterinary services such as treatment, vaccination, and disease control at their doorstep. 220 crore will be allocated for strengthening poultry development under the scheme. So, which of the following statements are correct? Police पचारुछि देखिबा हमें Gomata scheme will be implemented for 3 years with a budget of 342.65 crore यानी कि 3 years by implement करा जिवो. That is absolutely correct. The scheme aims to provide livestock farmers with veterinary services such as treatment, vaccination and disease control at doorstep. तो ultimately यार objective कौन? Objective होची जो livestock अछि या dairy sector अछि ताकू encourage करिबा, promote करिबा, ताकू कौन facilitate करिबा. सेति पई farmers माननकू ये livestock सेमानकर treatment हो, vaccination हो, ये सब जिनस जेमते doorstep रे provide करा जाई परिबो. 220 crore will be allocated for strengthening poultry development under the scheme. Okay, 220 crore से दोजी जदि देखो तो 342.65 crore इठी अछि पुनी एटा 220 crore कहीं गया हो incorrect होगा. So first and second statement correct, third टा itself contradictory अछि तो 1 and 2 are correct, third टा होची incorrect. ठीक अछि दुईटा जाक ठीक अछि. थर्ड टा देखो 220 crore is allocated for providing livestock healthcare services, not for poultry development. The poultry development funding comes under a separate sub-scheme in the Prani Sampada Samruddhi Yojana. Okay, Prani Sampada Samruddhi Yojana. So poultry development ପାଇଁ से ଦେଇଛି जो सेटा अलगा गोटे स्कीम रे आसी या अंडर रे आसुनी गोमाता. एठी इटसेल्फ ही आपण एटा को रॉन्ग बोली कहि परिबे पोल्ट्री डेवलपमेंट. आंसर होची 1 and 2 A. नेक्स्ट देखिबा which of the following statements are correct? Which of the following statements are correct regarding the Kotia group of villages dispute between Odisha and Andhra? Kotia Gram Panchayat has been under Odisha's jurisdiction since 1936.
The boundary dispute emerged in 1955 when Andhra Pradesh attempted to collect rent from the Kotia villagers. Supreme Court of India issued ruling in 2006 resolving the dispute between Odisha and Andhra. First statement देखो 1936 रे ही सेटाकू जुरिस्डिक्शन को अणागला कोटिया ग्राम पंचायत जोटा कि कोटिया पंचायत बोली कहा जाए जोटा ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश रे गोटे डिस्प्यूट आपनकर मेंस रो एटा सिलेबस डिस्प्यूट केवे इमर्ज करा गला 1955 रे जतबे आंध्र सरकार आसी की कहले भाई आपनको लैंड रेवेन्यू दबा को पड़िबो कोटिया विलेज या कोटिया विलेज पंचायत को वर्तमान सुधा कोनोसी रिजॉल्व हेई नाही डिस्प्यूट रिजॉल्विंग मेकानिज्म कोनोसी प्रकार काम करी नाही स्टिल दिस थिंग इज गोइंग ऑन जदियो 2006 रे सुप्रीम कोर्ट पाखकू केस टी जाइतला एबे भी स्टेटस क्यू से ही अछि डिस्प्यूटेड वर्तमान सुधा कोनोसी डिसीजन निया जाय नाही से हिसाब रे देखिया गले आंसर होची 1 and 2 ओनली ए इज द करेक्ट आंसर ओके स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट 1936 ओडिशा जुरिस्डिक्शन को आना गला रेंट कलेक्ट करा गला 1955 and 2006 रे भी अछि अंडर द स्टेटस क्यू नो फाइनल डिसीजन हैज बीन मेड नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट in Sundargarh district specially Raulkela. The local self-government system for Sundargarh district was revamped after its creation as a separate district in 1948. Local self-government system for Sundargarh district was revamped after its creation as a separate district. Separate district hela pore सेटाकू गोटे रेवाम करा जायथिला लोकल सेल्फ गवर्नमेंट तयारी करा जायथिला 1948 रे राउरकेला वाज डिक्लेयर्ड एज ए नोटिफाइड एरिया काउंसिल 1955 and was later bifurcated into two NSEs. Raulkela municipality became a municipal corporation in 2008. ठीक है तो यार आंसर जदि आपण देखिबे फर्स्ट स्टेटमेंट होची करेक्ट 1948 सेपरेट डिस्ट्रिक्ट राउरकेला वाज डिक्लेयर्ड एज नोटिफाइड एरिया काउंसिल 1955 लेटर बाइफर्केटेड इनटू टू एनएसईज थर्ड स्टेटमेंट जोटा अछि राउरकेला वाज डिक्लेयर्ड ए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सेटा 2008 नुए सेटा 2014 बोली आपण देखि परिबे 2014 हिसाब रे सेटा 14 रे सेटा को अनाउंस करा गलो तो सही हिसाब रे एटा इनकरेक्ट करेक्ट होची 1 and 2 ओके सेपरेट डिस्ट्रिक्ट है कि 1948 रे नोटिफाइड एरिया काउंसिल करा गला आपण माने जानिथिबे गोटे होची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जोटा कि सिटीज गुडा रे ता तळकू जोटा अछि म्युनिसिपल काउंसिल अछि ता तळकू अछि आपनकर जो नोटिफाइड एरिया काउंसिल जोटा हमें कहू नगर पंचायत बोली ओके तो ई टाइप रो डिस्टिंक्शंस अछि अर्बन एरिया रे सो आंसर होची 1 and 2 ओके 1948 सेपरेट डिस्ट्रिक्ट करा गला 55 रे नोटिफाइड एरिया काउंसिल करा जायतिला एंड दुई टी एनएससीज रे विभक्त करा गला राउरकेला सिविल टाउनशिप एंड राउरकेला स्टील टाउनशिप स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट इन 2014 देखो संकल्प बैच 20 जो 24 या 25 रो जो एग्जाम आसुची ता पई हमन स्टार्ट करूछु 11 संकल्प बैच प्रिलिम्स एंड मेंस रे कंबाइंड बैच रहइबो तनु 10th डिसेंबर एडमिशन क्लोज होची बिफोर द एडमिशन इज क्लोज्ड इफ यू वांट टू जॉइन और जॉइन करियो चाहू जदी जेएन लाइव कोड यूज करके याट भी फर्दर डिस्काउंट आपण पाई परिबे एथरे आपण को मिलिबो लाइव क्लासेस आपण को मिलिबो नोट्स मेकिंग मिलिबो मेंटरशिप सपोर्ट मिलिबो मटेरियल आपण को दिया जिवो टेस्ट सीरीज गोटे फ्री अछि राइट रिकॉर्डेड क्लासेस आपण देखि परिबे सब जिंस एठी आपनकर अछि तनो इफ यू वांट यू कैन जॉइन मटेरियल आपण को टेलीग्राम चैनल ले मिल जेबो एटा को स्कैन करिवे स्कैन करिके जो लिंक आसीबो सेठी जॉइन करिवे सो दैट आपनकर गाइडेंस हो मटेरियल हो जहां भी जिंस अछि related to OPSC you will get through this channel okay thank you see you soon in another video thank you